Welcome back again to my YouTube channel. Today in this lecture we are going to solve the another question of rotational dynamics of Maharashtra State Board. The question is a pendulum consisting of a massless string of a length 20 cm and a tiny bob of mass 100 gram is set up as a conical pendulum. Its bob performs 70 rotation per minute. Calculate the kinetic energy and increase in the gravitational potential energy of the bob. Use pi square is equal to 10. So we have to find the kinetic energy and gravitational potential energy of the conical pendulum. So we know that the kinetic energy is given as half into mv square, where v is the velocity of bob in a conical pendulum, and the potential energy is given as mgh. But in conical pendulum the change in potential energy is given as delta p और वो लिखी जाती है mg l minus h. Before solving this question हमें पता होना चाहिए कि velocity of a bob in a conical pendulum क्या होती है, and we have to know about the radius and the height of the conical pendulum. So we will go into the basic, we will see, and then we will start this. This is my conical pendulum, right, and there is my bob. और इस बॉब की जो मोशन होंगी कुछ इस तरह से होंगी, राइट. इट इज़ रिवॉल्विंग समथिंग लाइक दिस, राउंड एंड राउंड एंड राउंड टू द सेंटर ऑफ एक्सिस, राइट. ओके, इसकी जो रेडियस है, रेडियस हमारी होंगी ए वाली, तो हमें फाइंड करना है रेडियस. हाइट ऑफ द कोनिकल पेंडुलम इज दिस. इन दिस डायग्राम यू विल सी दैट दिस इज माई थीटा. ओके, इस एंगल थीटा पर हमारा बॉब रिवॉल्व हो रहा है, राइट. अगर ये एंगल थीटा है, by corresponding angle we can say that this is also my theta. ये दोनों एंगल हमारे थीटा हो गए, राइट. The component of tension is resolving like t cos theta and t sin theta, right. Now we have to find the height and the radius of this. Now we are having the theta over here, right. ये हमारी थी height of the pendulum, ये थी हमारी लेंथ ऑफ द पेंडुलम, एंड वी आर हैविंग द बॉब ओवर हियर, एंड द रेडियस ऑफ दिस बॉब इज आर. तो ये कुछ इस तरह से रिवॉल्व हो रहा है ऐसे. इन दिस फिगर द साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाय एल, देयरफॉर आर इज इक्वल टू एल इंटू साइन थीटा. वी हैव टू फाइंड द हाइट. सो फॉर हाइट वी कैन राइट cos of theta is equal to h by l, therefore h is equal to l into cos of theta. So this is the important result that we have to use while solving the question. This is h is equal to l cos theta and r is equal to l sin theta. I hope that you get this point. We have to find the velocity of bob. तो velocity of conical pendulum का formula v is equal to root under आर जी tan थीटा, ये था, राइट. और दूसरा एक फॉर्मूला हमें यूज़ करना है टाइम पीरियड वाला. सो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाय जी. तो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव टू यूज व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस. द गिवन क्वांटिटीज आर लेंथ दी है पेंडुलम की, दैट वाज 20 सेंटीमीटर. So I can write 0.2 meter. Again they have given mass of the bob, that was 100 gram. So I can write 0.1 kg. Again they have given the frequency. Frequency दिए वो लोगों ने 75 rpm, but we want in second. So I can do something like this. So I will get 5 by 4 rotation per second. Again they have given gravitational constant, that was g is equal to 10 meter per second square, and pi square is equal to 10. So this is the data that we have to use. Now we will find one by one. First of all हमें निकालना होगा टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इज इक्वल टू 1 बाई टा, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी दी है, राइट. So it nothing but 1 divided by 5 by 4
तो आई विल गेट 4/5. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टी. अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो आई विल गेट 0.8 सेकंड. वी नो द फॉर्मूला दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L cos theta upon G. So I am taking square root, then I am getting t square is equal to 4 pi square L cos theta upon G. So ये वाला जो L cos theta है ना, ये L cos theta हमारा क्या है? L cos theta है हमारा हाइट. ओके, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें हाइट की जरूरत होगी, राइट? सो वी विल फाइंड द L cos theta first of all. By rearranging I am getting t square into G upon 4 pi square is equal to L cos of theta, and L cos of theta is nothing but our height. t square जो कि था हमारा 0.8 का स्क्वायर, G की वैल्यू लेनी थी हमें 10. ओके, अगेन 4 into 10 पाई स्क्वायर की वैल्यू, दिस 10 and this 10 is going to be cancel, और 0.8 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 0.64 डिवाइडेड बाय 4, and on solving this I am getting 0.16 meter. I got the value of h, which is nothing but 0.16 meter, that we have to use while solving the question of gravitational potential energy. H is nothing but L into cos of theta. I have to find theta now. Then cos of theta is equal to h by L. So cos of theta is equal to 0.16 upon 0.2. So it become cos of theta is equal to 0.8. Then by using the log table we can find theta is equal to 36 degree 5 minute. Again this is important one that we have to use while finding the velocity of the bob. We know that the formula of velocity, that v is equal to under root of r g tan theta. So we know that the value of r is nothing but L into sin theta. अब हमारे पास थीटा भी है, राइट ना? थीटा की वैल्यू हमने निकाली 36 डिग्री 5 मिनट. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू r की जगह पर अब मैं लिखूंगा L इंटू साइन थीटा, राइट, into gravitational constant G and tan 36 डिग्री 5 मिनट. अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँ तो आई एम गेटिंग L की वैल्यू थी 0.2 इंटू साइन 36 डिग्री 5 मिनट इंटू ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू थी 10 एंड tan 36 डिग्री 5 मिनट. On calculating this I am getting 0.9 meter per second, that is value of v square. Now we can able to find the kinetic energy of this bob. Okay, so kinetic energy का formula क्या था हमारा? kinetic energy is equal to half into mv square. Half into mass of bob is 0.1 into velocity 0.9. After calculating this I am getting 0.045. This is kinetic energy of the bob. Now the increase in potential energy. Increase in potential energy is equal to delta PE, and which is nothing but mg L minus h. So we are having m 0.1, we are having g 10, again L is 0.2, and we have find h. H is 0.16. On solving this we will get 0.04 joule. So this is our change in potential energy. Okay, this is the change in potential energy. So this is the required answer of this question. Thank you so much guys for watching. Please like, comment and subscribe to the channel.